So last class we had studied about dispersion of light through a prism. Okay. Second thing we have Yes. studied. Second thing we have studied about what is white light and what are the sources of white light. In that Yes. we have also studied about wavelength. Yes. The third topic we have studied about what is called dispersion of light, and I have explained about all this figure, Colors. how the light gets refracted, and which has the least deviation and maximum deviation. What is called spectrum? These we have already studied. Yes. After that, we have also studied the observation in that previous figure. What is the maximum Sir, deviation? I have a doubt. Yes, yes. Tell me. Sir, before this slide, sir, that third slide, sir, can you open it? Yes, yes, yes. Sir, there are 8 rays of refraction, sir. After refraction, sir, there are 8 rays. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, actually, it will be only 7. It will be only 7. I think जैसे ऊपर रेड ले लिया है ना, तो नीचे भी एक जो ले लिया है वो पूरे रेड को कवर करने के लिए 2 रेज ले लिया इन दिस फिगर. एक्चुअली इट विल बी ओनली 7 because here the color is shown in more broader type. So you have to draw only 7 rays, not 8 rays. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, you have to draw only 7 rays, not 8 rays. Very good observation. Very good. What is your name? Just Sarthak. Very nice. Very good. Okay. We have also studied about the observation in this maximum deviation, maximum speed, maximum wavelength, minimum wavelength. And in that we have also studied, this is the very important step. The refractive index of the medium for violet color is more than red color, as the speed of violet color is less than the speed red color. इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं. We can study in the reverse order also. The refractive index of the medium, that is prism, for red color is Red is less less. Yes, than red than color is violet less color. than for violet color, as the speed of As red color is more than the speed of violet color, because refractive index and speed yes, of the light is inversely are proportional. inversely Yes, proportional. yes, correct. So we have also studied this. Uh, Cause of diffraction of light. Uh, this was the last topic we studied yesterday, I think. Cause. Uh, when the white light passes through air, all the components of the white light at the same speed, but as they enter into the prism, due to the change in the speed of the components of the white color, they bend through different angles and hence they get splitted. So यहाँ पर जो white light है, in this whatever the components are present, all components have the same speed. जितने भी color components हैं, सबका speed same है. So यहाँ पर splitting नहीं हो रहा है. But as soon as they enter into the denser medium such as prism, in that case what happens at this point where my cursor is, यहाँ पर देखो इस point पर क्या हो रहा है, refraction हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर refraction हो रहा है, and due to refraction there is a change in the speed of the light. यहाँ light का speed change हो जाएगा. ठीक है, as the speed changes, the wavelength of each color will also change. जितने भी colors इसमें present हैं, सारे का wavelength change हो जाएगा. And because of the change in the wavelength क्यों change हो रहा है? क्योंकि उसका speed change हो रहा है. इस चीज को ध्यान में रखना है. Wavelength change हो रहा है because its speed changes, and they bend through different angles. And when they bend through different angles, what happens? They get splitted. वो separate हो जा रहा है. And when they get splitted, they form
7 different colors on the screen. So here you will see that deviation for red color is less and the deviation for violet color is more. Yani maximum. Yani कि the violet color will form the maximum angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन हम कहां से लेंगे? ये जो इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड है, यहां से मेजर करेंगे विद दैट पर्टिकुलर इमर्जेंट रे, विद दैट पर्टिकुलर इमर्जेंट रे. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होगा तुम्हारा. रेड के लिए यहाँ तक आएंगे, ऑरेंज के लिए और नीचे आएंगे, येलो के लिए और नीचे आएंगे. सो द डेविएशन विल गो ऑन इंक्रीज. सो दिस इज द कॉज ऑफ dispersion of light. Now, the next thing we have to study, one activity is given in your book. Activity to show dispersion of light. You can do this activity at your home also. ठीक है, कोशिश करना अपने घर में, देखो ये सक्सेसफुल होता है या नहीं. This is the activity to form an artificial rainbow. ये इसमें artificial rainbow बनेगा. What is the activity? First step is take a glass bowl. ठीक है, यहाँ पर फिगर में बीकर लिया हुआ है. You can take a glass bowl, fill it with water. तो पानी से भर देना है. Now put a plain mirror inside it, making a certain angle. Say in this figure you will see that a plain mirror is placed in an inclined manner. In an inclined manner. ठीक है. Now place it near the window so that sunlight falls on it. खिड़की के सामने रखना है, so that direct sunlight falls on it. And if that arrangement is not available, अगर वो direct sunlight नहीं आ रहा है, you can use torch light also. You can use torch light also. ठीक है? So place it near the window so that sunlight falls on it. And once the sunlight falls on it, the reflected light, the sunlight will fall on the water, then it will enter into the mirror, and from the mirror again it will be reflected back on the wall. तो here wall नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा just ऊपर में एक पेपर है, white sheet of paper, and we will see that different colors will be formed on the white sheet of paper. सारा color नहीं दिखेगा because some of the colors will overlap. So few colors you can see. जैसे rainbow में भी we cannot see all the 7 colors. Only 3 to 4 colors we are observing it because some of the colors gets overlapped. So some colors will be visible on your paper, and that is the artificial rainbow that you can form on the screen. Screen मतलब on the paper. If the paper is not available, तो अगर घर में direct sunlight आ रहा है तो window के बगल में जो wall है, the light will be reflected on that wall, and you can see some of the colors of the rainbow. So this is the activity which is also given in your book. You can perform it at your home. So understood this activity? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Now, Yes, sir. okay. Now we are moving to the next topic. Formation of rainbow. Rainbow is the natural phenomenon of dispersion of light. ये natural है. The first figure which I had shown you, ये natural नहीं है. This is the artificial formation of rainbow. But now we are going to study the formation of rainbow in atmosphere, which is the natural phenomenon. Now, the first point related to it is rainbow is caused by dispersion of sunlight by tiny droplets hanging in the atmosphere after a rain shower. ठीक है? Heavy rain में ये rainbow नहीं दिखेगा. When there is heavy rainfall, उसमें rainbow नहीं दिखता. Rain shower, हल्का सा जो rain drops होता है, shower type का, उस case में you will be able to see. Always it is not visible. अगर sunshine थोड़ा सा रहेगा, then only you can see the rainbow. So rainbow is caused by the dispersion of sunlight by tiny droplets hanging in the atmosphere after a rain shower. Or sometimes you can see during also. Okay, but not during heavy rain. It should be
rain shower. Second point related to it is the water droplets here act as a prism, because when raindrops fall down on the earth surface, it is not totally spherical. ये totally spherical नहीं होता, वो tear shaped में होता है, आंसू का shape में, tear shaped. तो tear shaped is somewhat prismatic structure, prism की तरह उसका structure होता है, ठीक है? It is not totally spherical because of the pull of gravity. वो थोड़ा सा shape उसका change हो जाता है, prismatic structure होता है. तो each droplets act like a small prism. Third point is the water droplets refract. Refraction होता है, उसके बाद dispersion होता है. I will show you the figure also. First we will discuss the points. The water droplets refract and disperse the incident sunlight. तो पहले refraction होगा, फिर dispersion होगा. यहाँ पर तीन phenomenon occur होता है. Two phenomenon we have discussed just now: refraction and dispersion. And after that, these rays are then reflected internally and finally refract again and comes out in the form of raindrop. Comes out of the raindrop. पहले refraction होगा, फिर dispersion होगा, and after dispersion, what will happen? All the 7 colors will get reflected back. उसी drop में reflect अंदर कर जाएगा. उसको हम लोग internal reflection भी बोलते हैं. And from the raindrop, and then again it comes out finally after refraction. Due to the dispersion and internal reflection of light of different colors, they reach the observer's eye and we see the rainbow. तो सबसे पहले हम इस फिगर को दिखा के हम समझा रहे हैं. You will see this figure. Yes, now see this figure. Formation of rainbow. ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये है तुम्हारा रेन ड्रॉप, ठीक है? शावर ऑफ रेन में एक ड्रॉप को हमने लिया, ओनली सिंगल ड्रॉप. दिस हैपेंस इन ऑल द ड्रॉप्स. दिस इज द सनलाइट, सन, एंड दिस इज AB इज योर सनलाइट, ठीक है? और व्हाइट लाइट यू कैन से. When this sunlight falls on the raindrop, what happens at point B? First phenomenon occur, refraction. यहाँ पर refraction हुआ. Inside the drop क्या हो रहा है? Dispersion हो रहा है, ठीक है? And at point C, they get internally reflected back. ये reflect हो जा रहा है internally, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं total internal reflection. ये word you have to study in standard 12. ठीक है? Total internal reflection किसको कहते हैं? That you have to study in standard 12. अभी तुम लोग बस जान लो कि internal reflection के बारे में. Internally they get reflected back, and when they get reflected back into the drop at point D, again यहाँ पर क्या हो रहा है? Refraction हो रहा है. यहाँ पर dispersion नहीं हो रहा है, यहाँ पर refraction हो रहा है. And after refraction, it emerges out and falls on our eye, and we see the formation of rainbow. Rain. Yes. तो यहाँ पर तुम्हारा refraction, dispersion and internal reflection, ठीक है? Refraction, dispersion and internal reflection takes place in the formation of rainbow. So this is how the rainbow is formed. Now one point more you have to study in rainbow. An important point to be noted here is that a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. इधर sun होगा, उधर rainbow नहीं बनेगा. You have to face in the opposite direction of the sun. Suppose sun is in the east, then the rainbow will be formed in the west. If the sun is in west, then the rainbow will be formed in the east. ठीक है? Always in the opposite direction to that of the sun. This is how you will observe. और अगर सन और हाँ हेड हाँ तो कहाँ बनेगा? यस, उस केस में रेनबो नहीं दिखेगा, ठीक है? उस केस में रेनबो एग्जैक्टली ओवरहेड होगा तब तो नहीं दिखेगा, बट इफ इट इज लिटिल बिट आल्सो इन द ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, देन यू कैन सी in a particular either east or west direction. So this is how the rainbow is formed. Understood the figure? Any problem in the figure? No, sir. Okay. No, sir. Okay. Now come to the next topic. Now here we are moving
टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक तुम्हारा डिस्पर्शन था, इसके बाद डिस्पर्शन तुम्हारा खत्म हो रहा है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड लेंस। सर एक बार इसके ऊपर वाला दिखाइए तो, जो रेनबो वाला था, रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम। ओके ओके, यस यस सर, हो गया। I will send you on the link. I will send you. You can see the link also. ले लिए सब। Okay. Okay. Now, the next topic is lens and refraction of light through a lens. Lens किसको कहते हैं? And how the refraction takes place through a lens. Now, first of all, lens. A lens is a transparent refracting medium bounded by two curved surfaces which are generally spherical. ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस, ठीक है, which is bounded by two curved surfaces which are generally spherical. जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल ही हो, but at least one surface should be spherical. अगर लेंस है तो कम से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल हो गई, कर्व्ड सरफेस हो गई। अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल है, कर्व्ड है, तो भी लेंस है। अगर कोई एक सरफेस स्फेरिकल है तो भी लेंस है। अगर दोनों सरफेस स्फेरिकल नहीं है, प्लेन है, then it is not called a lens. अब उसको हम लोग बोलेंगे स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब we had studied in the previous chapter. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो वो लेंस नहीं कहलाएगा बिकॉज कोई भी सरफेस उसका स्फेरिकल नहीं है, कर्व नहीं है। तो एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड, कोई एक सरफेस। नाउ कैन यू टेल मी कहां पर हम लोग लेंस देखते हैं? कैमरा। कैमरा। यस, कैमरा में लेंस होता है। Sir, और in our eyes also. यस यस, कौन सा लेंस Sir, होता है? Eyes also. आइस में कौन सा लेंस होता राय है? में चक्षु। कन्वेक्स, कन्वेक्स, ठीक है। वी विल स्टडी। और कहां लेंस देखने? Sir, in spectacles. Sir, in Sir, powered spectacles. वेरी वेरी गुड, Spectacles. यस यस, वेरी Sarthak's powered spectacles. यस। स्पेक्टिकल्स में हम लोग देखते हैं, चाहे मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, दोनों में लेंस का यूज होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में भी लेंस का यूज होता है, एंड मेनी अदर वी विल स्टडी यूजेस ऑफ लेंस, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेंस क्या चीज का बना होता है? द लेंस इज यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ग्लास का हो या प्लास्टिक का भी हो। नाउ टाइप्स ऑफ लेंसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेस। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता है, वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ लेंस, whichever lens it may be, चाहे convex हो या concave हो, whatever it is, when light falls on lens, can you tell me what are the phenomenon that occurs in case of lens? Refraction. Refraction. ठीक है, refraction. Refraction. only refraction की और भी कुछ? Sir, sometimes Partial dispersion. reflection. Very good. Partial Sir, reflection. partial reflection. Partial? Refraction. Reflection. नहीं, refraction. Reflection. Reflection. Yes, yes. Sir, reflection. Partial reflection. Yes, yes, very good. Partial reflection भी होगा, partial बहुत कम, but most of the light will pass through the lens. उसको हम लोग कहते हैं refraction. That we have already studied what is called refraction. तो partial reflection भी होता है, ठीक है। तो reflection भी होता है और refraction भी होता है। तो here हम लोग को reflection नहीं पढ़ना है, हम लोग को refraction पढ़ना है। तो types of lenses, तो convex lens और converging lens। पहला लेंस होता है convex और converging. Why it is called converging? I will show you in the figure. और दूसरा होता है concave और सॉरी डाइवर्जिंग का यहाँ स्पेलिंग Diverging. So diverting लिखा हुआ। हाँ हाँ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक। G होगा। हाँ हाँ, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस और
diverging lens. These are the two types of lenses. Now, next. First of all, we will discuss what is called convex or converging lens. Convex lens किसको कहते हैं या उसको converging lens भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? A convex lens is a lens which is thicker in the middle and thinner at its periphery. Periphery का मतलब होता है ends. This end and the another end. ये दोनों end, ऊपर और नीचे जो end दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको periphery कहते हैं. This end and this end is called periphery मतलब ends. And you will see that this lens is thicker in the middle, and as we go to the periphery towards it becomes thinner. Thinner. Yes. So this type of lens is called convex lens. और इसको converging lens क्यों कहा जाता है? And इसको कहते हैं देखो beam, इसको कहते हैं beam of light. 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 rays को लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो all these rays together combines to form a beam of light. So when a light beam falls on it, after refraction, what happens? They bend inwards and meet at a point. ये एक जगह पर आके meet कर गया, इसको हम लोग कहते हैं converge कर गया, ठीक है? एक जगह आके meet कर गया और converge कर गया. उस point को हम लोग बोलते हैं focus. वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे. अभी सारा terms को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग terms आगे चल के पढ़ेंगे. इसी चैप्टर में है, पहले हम लोग लेंस के बारे में तो पढ़ ले. तो this point is called focus. और यहीं पर तुम्हारा क्या बनेगा? Image बनेगा, ठीक है? So it is called converging lens because when a beam of light falls on it, it converges to a single point. सारा point को यहाँ पर convert कर देगा. हाँ. जैसे you might have, जैसे you have performed, you might have performed, some of you might have performed one experiment. Nowadays you will see that in practical geometry box one lens is given. एक लेंस दिया जाता है ज्योमेट्री बॉक्स में, कभी देखते हो? Yes, sir. उसको कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है? Yes, sir. और उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस. दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस. और उसमें एक एक्सपेरिमेंट है कि व्हेन यू विल पुट इट in sunlight, you will see that all the rays will converge to a point on the other side of the lens, and that point becomes very hot. और उससे तुम Yes, sir. एक पेपर भी बर्न कर सकते हो और मैचस्टिक भी बर्न कर सकते हो without producing any friction. वो हीट से क्या होता है? जल जाता है. Either paper you can burn, or dry grass can be burned, or you can even burn the matchstick. तो उस पॉइंट पर सारा रेस क्या हो जाता है? कन्वर्ज हो जाता है. यानी कि all the heat of the sunlight gets converged at a single point, and that point becomes very hot. और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस. So it is called as converging lens. Understood this figure? Yes. Now, sir. now types of convex lens. कितने तरह के convex lens होते हैं? There are 3 types of convex lens. It is called double convex lens or biconvex. This is called double convex or bi, क्योंकि इसका दोनों surface तुम्हारा bulged किया हुआ है. Outward it is bulged. दोनों sides तुम्हारा spherical है, ठीक है? Curved है. It is called double convex or biconvex. This is called plano-convex. Plano-convex इसलिए कहा जाता है कि one surface is plane and another surface is convex. One surface is plane and another surface is convex. So it is called plano-convex. And it is called converging meniscus lens. और इसका दूसरा नाम है तुम्हारा concavo-convex. ये वर्ड को लिख लो, concavo. CONCAVO. concavo-convex. इसलिए इसको concavo-convex कहा जाता है because one side is convex. ये वाला पार्ट convex है और ये वाला साइड concave है. इसमें दो है, एक साइड convex जो bulged किया हुआ है, this is called convex part, और ये पार्ट जो है अंदर की ओर जो गया है, that is called concave side. That's why it is named as concavo-convex. So these are the 3 types of convex lens or converging lens, but we have to study only one.
that is double convex lens or biconvex. Understood? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें बता सकते हो कि one thing is common in this case. क्या common है? Sir, all Convex. are convex lens. Convex. वो तो दिख ही रहा है, all are convex lens. और कुछ चीज? All are spherical. Conversion. All are thicker in the middle. Though the shape changes. यहाँ पर देखो shape change हो रहा है second और third में, लेकिन all are thicker in the middle. यहाँ भी thick है middle में. Second case में भी plano convex में भी thicker in the middle and concavo convex में भी thicker in the middle. ठीक है? All are thick in the middle. क्योंकि ये convex lens है तो thick होगा ही middle में. ठीक है? And inner and ends में क्या है? Thinner है. Periphery में Thinner. thinner. Periphery में thinner. Yes. Now, next lens, concave lens. What is called concave lens? A concave lens is thicker at its periphery and thinner in the middle. ठीक, उसका opposite हो जाएगा. ठीक है, convex का opposite. You will see that this lens is thinner in the middle and thicker at its periphery. जैसे हम लोग ends में जाते हैं, वो lens thick होते जाता है. ठीक है? So this type of lens is called concave lens, and why it is called diverging lens? इसको diverging Because इसलिए भी divides कहा- all. yes. All the time. A light beam diverges on passing through it. ये separate हो रहा है, अलग अलग हो रहा है. देख रहे हो? 3 parallel rays are passing through it. ये है parallel rays. ठीक है? Parallel beam of light. And after refraction, they get spreaded. वो अलग अलग हो रहा है. That's why it is called as diverging. ये diverge कर रहा है, separate हो रहा है, अलग अलग जा रहा है. Now, types of concave lens. देखो, ये है तुम्हारा plano concave. Plano concave क्यों है? Because one side is plane, another side is concave. It is called plano concave. Second is double concave or biconcave. Biconcave, that's it is called because both the sides are spherical or you can say curved. दोनों side तुम्हारा concave. So it is called as biconcave. And this is convexo concave. Convexo, क्योंकि one side is convex, another side is concave. Convexo concave. यहाँ पर फिगर में उतना क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा और थिन करना होगा. ये surface should bend more inward in comparison to outward. So what will happen? In the middle part will become thinner. So in this all the three figure you will say the middle part is your thinner and the ends part, that is the periphery part, will be thicker. So these are the types of concave lens. Someone listening song.